Welcome to the session 2 of comprehensive revision for the subject data interpretation and visualization using Python. So we will be having two things in this revision. Today I'll be covering, first of all, I'll be covering one theory paper and then I'll be covering a few MCQs, sample MCQs, the type of question which may come into your internal assessment. Okay. So before attempting the paper, there are a few instructions which are already always displayed on your paper. So you have to thoroughly follow them. Your paper is of 90 marks and in which you have two sections, section A and section B. In which section A is compulsory and section B you have to answer four questions which carries 15 marks each. So the total comprises 15 into 4 that is 60 and 30 marks for question 1. Also, it is always suggested for students to attempt all the parts of a question together so that the marking becomes uh, easier and the reading of the paper becomes good for the teacher. So this is required, but obviously if you do not do that, that's also okay. So let's start. So I'm discussing one question paper which has come in previous years. This is of data interpretation and visualization using Python. And I'll start with the very first section of the question paper. I hope my screen is visible and I am audible to all. Any one of Yes, you? ma'am. Okay, thank you. So let's start. The very first question is of 5 marks. The question is explain unimodal, bimodal, and multimodal distribution with the help of example. So this is from your unit 1. I hope we all know what is unimodal, bimodal, and multimodal. So I am just providing you the pattern through which you have to answer the question. So for 5 marks, you have to write the definition of every point. That is, you have to write the definition of all threes. What is unimodal, what is bimodal, and what is multimodal. Along with the definition, you have to provide at least one example so that it is clear from the example that you have understood the concept. And then, if possible, since in this question I can make a diagram, so if possible, you can show it by a diagram that what is unimodal, in which there is one mode, bimodal means two mode, and multimodal means we have more than two modes. So this pattern should be taken to answer any question which is lengthy enough. I mean, this much is enough for a 5 marks question. मैम स्क्रीन नहीं शो हो रहा है. Okay, just a sec. Let me know if you see my screen. Is it visible now? Yes, ma'am. Okay. So I was saying that this very first question is that explain unimodal, bimodal, and multimodal distribution with the help of example. For such questions, you have to give the definition plus example along with the diagram if the diagram is there, which is relevant to your question. Next is majorly in this subject, you will get questions that are based on input output. A few theoretical questions will also be there, but majorly you will get the question that requires you to give output of something or that requires you to write small code snippets. So we will see the next question is again of 5 marks and it is from data frames. That is your pandas unit number 3. It says that consider the data frame first and second. So you have been given two data frames, first and second. In both the data frame, you have two columns, column 1 and column 2, column 1 and column 2. Values in each column is different. Now they are asking you to consider the following code segment. There are two code segment and you have to find the output. So since you have already done these revision of such functions in your first session of comprehensive class, so I will not be explaining the function. I'll tell you that how exactly you should be attempting it and what will be the output of the program. Also, I'll be providing this PPT to you guys so that you can go through it. Since we just have 2.5 hours, so we will cover this question paper and then we will cover a few MCQs as well. Okay, so here you can see I have two codes. In right, I need to do merging of both the data frames on right join, and in second, I have to merge both the data frames on inner join. So on right, you can see on column 1, and in the second, you can see you have to do it this on column 2. So on my right, you can find out the
On my right, you can find out the output that is required. Just a sec, let me. Okay. So now the next question is again of 5 marks. Here they are asking you write the Python command to create a figure object using matplotlib. So you have to create a figure object और उसमें क्या expect कर रहे हैं ये? The very first thing is the figure object should have one subplot which has 3 line graphs. So you should have one subplot with having 3 line graphs. And then you have to define the legend. You have to define the chart title, define the style and color. So you can see there are 5 items that have already been explicitly asked in question. You have to define how to define subplot, how to define the legend of the graph, how to define the title of the graph, and then how you would be you would be giving the different style and color to each line. So for this, you need to import matplotlib, and in matplotlib, you have to use the subplot functions. So these functions have also been covered in the first session. So this is the function, and you can easily write the ax is the object that I have created. You can write ax dot plot, giving them x and y coordinates, line style, whichever you prefer, the color and the label. These parameters are well explained into your SLM as well. You can refer your SLM for such parameters and other information. Next is again a 5 marks question that asks you list and describe the steps involved in the process of data analysis. So we have 5 steps that are involved in the process of data analysis. First is defining your problem, then collecting your data, then you have to clean the data and perform EDA. EDA is exploratory data analysis. And then you have to interpret results and apply them. So in my slide, I have given you 5 pointers that could be given in this question. You have to elaborate each and every point along with the suitable example if possible. Okay, then only you will be able to get 5 marks. So remember that in any 5 marks question, if it is a theoretical question, always try to bifurcate the answer into points and then explain each point thoroughly along with the examples so that it should show your understanding of the topic. All of you are requested to mute yourself. Okay, so now these are the questions I'm talking about. These are the more typical questions. For example, you can see it says give the output of the following code snippet. So you have been provided a code snippet and you are expected to write the output of this code. So as you can see in the first part, it says y equals to np dot arrange 12 reshape into 4 comma 3. That means I have to arrange 12 numbers. 12 number means it will start from 0, it will go till 11. So I'll arrange 0 to 11 in a format of 4 rows and 3 columns. So you can see on the right hand side, this one. On the right hand side, this is your first array. That is number 0, 1, 2, 3 up till 11 are arranged into a shape of 4 rows and 3 columns. So I have asked NumPy to arrange the numbers and then reshape them. Then it says that for all the, see, this has this particular array matrix has been saved into a name y. ठीक है, y variable का नाम है. Now it is saying कि इस y के अंदर further you have to do what? For every number which is greater than 5. That means 6, 7, 8, 9 up to 11. You have to set the value as -1. Now if you print y, so what will you get? You will get an array of 4 cross 3 in which all the numbers which are greater than 5 will be replaced by -1. So you can see my last 2 rows are replaced by -1. Okay, so this is the output of this program. Similarly, in next question, you have been given that x equals to np dot array. You have been given an array with the value 2, 4 and 5, 1. Further, it says that you have to create an array z which says what? Which is np dot once like s. Once like means the function once like produce an array with the value 1. Okay, and the like syntax tells the compiler that okay fine, you have to produce here
The like syntax tells the compiler that you have to produce the output as in, suppose my current array is which I have defined is 2, 4 and 5, 1. So it is a 2 cross 2 array. Right. So I'm asking compiler to generate a 2 cross 2 array with values set to 1 because the array that I have given in parameter is a 2 cross 2 array. So the compiler will generate an array Z in which there are 2 cross 2, 2 rows, 2 columns, but all the values are set to 1. So you can see output on my right hand side. So this is the output. Next, it says further, I want np.I 2 into x. So you have to generate a matrix. So I matrix basically gives you an identity matrix of number of rows, whatever you suggest. So it is always a square matrix. Okay. Matrix given by I is always a square matrix. So we just need to provide one dimension. So I'm telling him to generate an I matrix of 2. That means it will generate an I matrix of 2 rows and 2 columns. This will be okay. Further to this matrix 1 0 and 0 1, you have to multiply the original matrix x. So herein जहाँ पे भी value 1 है वहाँ पे original matrix की value आ जाएगी because you know that in numpy the matrix the multiplication sign propagates element by element. That means element 0 0 of one array will get multiplied with element 0 0 of second array. It is not an actual matrix multiplication. It is simple array manipulation. Okay. So here you will get the answer as the first element because since here you have value 1. So the first element will come as 2 and here then the second will be 0, the third will be 0 and the fourth will be 1 because here the first element is 2. So 2 into 1 is 2, 4 into 0 is 0, 5 into 0 is 0 and 1 into 1 is 1. So this is the output. So such questions will come into your exam in which your basic understanding is tested and from all the units, specifically from the units like NumPy, Pandas, and Matplotlib, you will easily get such questions. So major crux of the paper is how well you have understood Python for any kind of data manipulation. So in next question, we have the question is for 6 marks and we have 3 parts. That means each question will give you 2 marks. And the question is you have two series. You have two series S1 and S2 with the index A, B, C, D. And in the other series you have index A, B, D, E. So here you can see that index have been defined. Default index are also possible, but यहाँ पे इन्होंने जो series बनाई है उसका index define किया है. That is why ordering is different. Default series का ordering हमेशा 0, 1, 2, 3 indexing होता है. इसमें they have indexed as A, B, C, D. Also further इसका इंडेक्स सीक्वेंस में है ए बी सी डी और सीरीज 2 का जो इंडेक्स है वो आपको ए बी सी डी ई दिया सी मिसिंग है ए बी डी ई दिया है. नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू गिव आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फॉलोइंग कोड स्निपेट्स. पहला वाला कहता है S1. S1 क्या है सीरीज का नाम. सो S1 कौन सी सीरीज है पहली वाली सीरीज है. S1 में क्या करना है आपको when you give colon that means from the beginning. So from the beginning to the element number 3. ठीक है. So always from beginning you have to start till element number 3 you have to go and you have to multiply each number that you will get in this series by 10. So basically इसमें आपने सीरीज का स्लाइस किया है. This one is slicing of the series and this is a broadcast operation. Okay. So what I have done is I have sliced the series. Series 0 से लेकर 3 यानी कि लास्ट इंडेक्स कभी भी कंसीडर नहीं होता है. So it will become 0, 1 and 2. So we will get values from 0 to 2. So what are the various values from 0 to 2? It is 1, 2 and 3. So I have got value 1, 2 and 3. If I multiply them by 10, it will become 10, 20 and 30, which is further the output of my code snippet. Okay. So this is 10, 20 and 30. In exam, even if the question is of 2 marks, you are not expected to explain anything. क्योंकि साफ साफ आपसे output पूछा है बच्चे, तो आपको किसी भी तरीके का explanation नहीं देने की जरूरत है. आप सीधा आउटपुट लिखेंगे. बस इतना ध्यान रखना है कि आपका आउटपुट करेक्ट आए. कोई भी एग्जीक्यूशन पैटर्न या एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती है unless and until it is explicitly asked by the examiner. Next is
इट इज आस्किंग यू टू सम द सीरीज, S1 और S2 का सम करना है. नाउ दिस क्वेश्चन इज ट्रिकी बिकॉज यहाँ पे जो सम है उसको अगर आप देखें, अगर आप एक लेमैन की तरह देखोगे तो आप सीधा सीधा सम कर दोगे. 1 को 5 से ऐड कर दोगे, 2 को 6 से कर दोगे, 3 को 7 से कर दोगे एंड 4 को 8 से कर दोगे. बिकॉज यू सी यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है. बट this is not expected. Okay, what exactly is expected? That you have to basically add the elements of series 1 with the elements of series 2, but by default, by the nature of pandas, only the element with same index will be added. Okay, so let's see. यहाँ पर अगर मैं जाऊं तो मेरा पहला इंडेक्स क्या है? A. इसका भी पहला इंडेक्स क्या है? A. तो फर्स्ट वैल्यू ऐड होके मुझे मिल जाएगी 5 + 1, that will be 6. Now B and B, 6 + 2, that will be 8. Now here I have an index C, but here I do not have an index C. यहाँ पे C नाम का कोई index नहीं है. So this will return me NaN. That is not a number. Whenever a value is missing from the series, whenever an index is missing from the series, that is treated as not a number. तो यहाँ 3 नहीं आएगा, 3 + 7 नहीं आएगा. It will give you not a number. Also, you can see that series has 4 element, but इसके output में I have 5 element. Why? Because if you see the index of both the series, there are 5 unique index. So always remember, जितने number of unique index हैं उतने ही output आएंगे. So there are 5 unique index A, B, C, D and E, in which there is no matching index of C in series 2 and there is no matching index of E in series 1. Series 2 के पास C नाम का कोई इंडेक्स नहीं है, सीरीज 1 के पास E नाम का कोई इंडेक्स नहीं है. So what will happen? These series, this C and E series, these elements will give you not a number. ठीक है. Then D index is there. So the value of D index in series 1 is 4 and the value of D index in series 2 is 7. So this 4 + 7 becomes 11. So you will get 11 as an answer. So the output is in the order index A, B, C, D and E, in which index C and index E are missing. So that is why you will get an NaN here. Otherwise, everything is fine. Now next is S2. So in series 2, as you can see, in series 2, you will get here. You have to start from the beginning and it is asking you to slice from -1. So whenever a minus is given in the indexing, that means we are trying to start from the bottom. We are trying to start from the bottom. So I want the values to start from the bottom and the values of series 2, I have to I have to multiply it by 5. I have to multiply all the values of series 2 starting from the bottom by 5. So the answer is 8 into 5, 40, 7 into 5, 35, 6 into 5, 30 and 5 into 5, 25. Okay. So these were 30 marks, 5 questions. These were 6 part, I guess, for 30 marks. And now the section B of this paper. So you have choice in section B, but the choice is always based on questions. I mean, there are like you have 7 questions or you have 6 questions, जिसमें से आपको 4 या 3 अटेम्प्ट करने हैं. बट ऐसा कभी मत करना कि सपोज आपको क्वेश्चन 2 का A पार्ट आता है और क्वेश्चन 3 का B पार्ट आता है और आप दोनों अटेम्प्ट करके आ जाओ. ठीक है, ऐसा कभी इस तरीके से मार्क्स नहीं मिलते हैं बच्चे. मार्क्स आपको एक पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के ही मिलेंगे. अगर आप क्वेश्चन 2 का A और क्वेश्चन 3 का B अटेम्प्ट कराओगे तो मार्क्स उतना ही मिलेगा और जो एक्सक्लूसिव 4 क्वेश्चन होंगे वही मार्क होंगे. नाउ नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 2. इट सेज मैम कंसीडर. हाँ जी. मैम मैं पूछा था एग्जाम में हमें ऑप्शन दिए जाएंगे ना कि आप ये कर लीजिए या फिर वो एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं या फिर वो दोनों ही को दो हाँ आएंगे हाँ तो हाँ एक क्वेश्चन करना होगा ऐसे. बिल्कुल. आपको सेक्शन बी में ऑप्शन मिलता है. सेक्शन बी में ओके मैम. जनरली 6 या 7 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको 4 करने होते हैं. सेक्शन ए में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है. ठीक है, सेक्शन ए कंपलसरी होता है. ओके मैम, थोड़ा सा आप मुझे शुरू का बता देंगे क्योंकि मेरा थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ हूँ, मैं बाहर था मैम.
बेटा इस क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, सिंस ये क्लास यूट्यूब पे भी जाएगी, सो आपको शुरू की सारी क्लास यूट्यूब रिकॉर्डिंग में दिख जाएगी, ठीक है? आई ओके एम मैम, थैंक कंटिन्यूइंग यू। बिकॉज वी जस्ट हैव 2.5 hours and I have to cover a lot of questions. ओके मैम, थैंक यू। Okay. So now the question 2 is consider the data frame. So you have been given a data frame here and there are certain questions with this data frame. And you can see on the right hand side in the black I have given you answer. So ये answer black में क्यों है? For a few questions I have run them on the compiler so that to give you an idea कि आपको भी अगर practice करनी है तो आप compiler पे run कर सकते हैं, but definitely exam में आपके पास कोई compiler नहीं होगा. So exam will test your knowledge about the data frame and coding. So here, as you can see, इस क्वेश्चन में हमें एक डेटा फ्रेम दिया है एंड वी हैव गिवन सर्टेन क्वेश्चन जिसमें हमें कोड लिखना है. तो ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे दिया है कि कंसीडर द डेटा फ्रेम इज गिवन, इसका मतलब ये डेटा फ्रेम बना हुआ है. डेटा फ्रेम बनाने के लिए हमें कोई कोड नहीं लिखना है, ठीक है? अगर लिखा होता कि क्रिएट अ डेटा फ्रेम तो आप डेटा फ्रेम बनाने का भी कोड लिखते. दैट इज वन थिंग. उसके बाद there are 7 questions and you have 7 marks, so each question carries 1 marks. Now the very first thing is compute the correlation of age with both weight and height. So you see clearly इसमें लिखा है आपको पाइथन कमांड्स देने हैं, ठीक है? कमांड्स देने हैं, पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना. कोई इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, कोई डेटा फ्रेम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. सीधा अपनी ये पढ़ो कि क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड है और उस एक्सपेक्टेड वैल्यू का आपके पास क्या आंसर है. दिस इज ऑल यू हैव टू टेक केयर. So the very first is compute the correlation of age with weight and height. तो आपको age, weight और height का correlation निकालना है. You can see the output here. The very first one. मैंने यहाँ पे कमेंटिंग कर दी है ताकि जब आप इसको पीडीएफ से पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा. सो आई हैव टू क्रिएट कोरिलेशन ऑफ डेटा फ्रेम. द नेम ऑफ डेटा फ्रेम आई हैव टेकन डीएफ. ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी नेम ले सकते हैं, वो आप एक्सप्लेन मतलब लिख सकते हैं एक लाइन में दैट आई एम टेकिंग द नेम ऑफ डेटा फ्रेम एज डेटा और डीएफ. जनरली हम डीएफ लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम, सो आई हैव टेकन डीएफ. सो कोरिलेशन फंक्शन होता है जिसके अंदर आपको डेटा फ्रेम की डिफरेंट कॉलम्स पास करने हैं. सो बेसिकली हमने क्या किया, हमने इस डेटा फ्रेम डीएफ के कॉलम एज, वेट और हाइट को स्लाइस कर दिया. दैट मीन्स इसमें से नेम हटा दिया, एज, वेट और हाइट का एक टेबल बन जाएगा इस इतनी कमांड से. दिस मच कमांड इज टेलिंग द कंपाइलर टू मेक अ टेबल ऑफ एज, वेट एंड हाइट. और इसका कोरिलेशन हम डॉट कोरिलेशन फंक्शन से निकाल सकते हैं. डॉट CORR फंक्शन है. ये सभी फंक्शंस कोरिलेशन के, मीन के, मीडियन के, मोड के सभी फंक्शंस आपके एसएलएम में भी प्रोवाइडेड हैं, एसएलएम में भी क्लियरली गिवन है, तो आप वहां से भी ये फंक्शंस को रिवाइज कर सकते हैं. सो दिस फंक्शन विल गिव मी द कोरिलेशन और आपको एग्जाम में ये लाइन ऑफ कोड लिख कर आनी है. दिस वन लाइन इज मोर देन सफिशिएंट. आपको इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. जहां भी आपसे कोड कमांड या आउटपुट पूछी है वहां पे एक्सप्लेनेशन देकर आप अपने एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ये कमांड्स लिखने के लिए यू हैव टू राइट थॉटफुली. ठीक है, आई हैव सीन दैट स्टूडेंट वेस्ट देयर टाइम एक्सप्लेनिंग द कमांड्स विच दे नो. आपको लगता है कि ये मुझे आती है, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ. डोंट डू दैट, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. देखो, आप मुझे 10 लाइन में एक्सप्लेन करके दोगे या ये एक कोड स्निपेट लिख के दोगे, यू विल गेट 1 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन. सो नेवर वेस्ट योर टाइम एक्सप्लेनिंग थिंग्स, ओवर एग्जैजरेटिंग, क्योंकि उससे बस आपका टाइम वेस्ट होता है, राइट? So always write thoughtful and precise answers. That is what expected from a student. Now next it is, you have to sort the frame in descending order. So you have to write, the command is df.sort function. You have to write df.sort values. कौन से कॉलम से सॉर्ट करना है इसमें साफ साफ लिखा है, एज, तो यहाँ लिख दिया बाय एज. एंड सिंस यू आपको डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है तो यू हैव टू राइट असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स. सो वी हैव टू give this command to sort the data frame. Next is to find the index for the row with minimum age. So हम minimum function use करेंगे. हमें निकालना क्या है, इंडेक्स निकालना है. तो जब भी हमें किसी चीज का इंडेक्स निकालना होता है तो फंक्शन होता है IDX minimum. ये क्या करेगा, डेटा फ्रेम के कॉलम एज को एक जगह ले लेगा और उस कॉलम में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसका इंडेक्स निकाल के देगा. यहाँ पे अगर आप देखो, सो मिनिमम वैल्यू इज 15 और इसका इंडेक्स क्या है, 0, तो ये मुझे इंडेक्स 0 निकाल के देगा. नेक्स्ट इज
कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव सम फॉर वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट। सारे स्टूडेंट्स का जो वेट कॉलम है उसका क्यूमुलेटिव सम निकालना है। सो यू कैन फाइंड दैट यूजिंग द फंक्शन कम सम। कम सम इज द फंक्शन शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्यूमुलेटिव सम। सो यू अगेन, हमें क्या चाहिए था, वेट कॉलम चाहिए बस, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव सम फॉर वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो हमने क्या किया, हमने अपने डेटा फ्रेम का वेट निकाला और उसका क्यूमुलेटिव सम फंक्शन कॉल कर दिया। नेक्स्ट इज टू सेट द हाइट ऑफ रीता एंड रोमी टू एनए। तो आपने क्या करना है, रीता एंड रोमी की हाइट एनए सेट करनी है। नाउ रीता एंड रोमी इज नॉट अ कॉलम, रीता एंड रोमी इज अ रो। ठीक है ना, रीता और रोमी जो वैल्यू है वो रो का वैल्यू है, कॉलम का नहीं है। तो जब कॉलम का वैल्यू होता है तो आप सीधा डीएफ करके उसके अंदर आप कॉलम का नेम पास कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको रो चाहिए, सो सिंस आपको रो चाहिए तो आपको एलओसी कॉल करना पड़ेगा, लोकेशन। सो डीएफ डॉट एलओसी in which you have to find what exactly you are finding, you are trying to locate a name, क्योंकि रीता और रोमी क्या है, नेम है। so I'm trying to look up the name column of data frame in which I'm finding कि जहां पे भी मुझे रीता और रोमी मिले वहां पर उस वाली रो में हाइट की वैल्यू को क्या करना है, NaN। ठीक है, so this is the decoding of this statement. Next is to replace the value 32 with 18 and 33 with 19 in age column. तो अब जब मुझे कॉलम मिल गया तब तो आई हैव वेरी सिंपल कोड। मैंने डेटा फ्रेम का नाम लिखा, ब्रैकेट में कॉलम का नाम लिखा, डॉट जो भी फंक्शन है, फंक्शन क्या लगाना था, रिप्लेस करना है, तो फंक्शन रिप्लेस लग गया। और किसको किससे रिप्लेस करना है, 32 को 18 से, तो हमने यहाँ दे दिया 32 रिप्लेस विद 18, 33 रिप्लेस विद 19। तो ये एज कॉलम में जाएगा, जहां पे इसको 32 मिलेगा वहां पे 18 लिख देगा, जहां 33 मिलेगा वहां 19 लिख देगा। नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन मैप। सो यू हैव टू मैप द वैल्यूज टू कन्वर्ट, आपको नेम की वैल्यूज को अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपके पास दो कोड अवेलेबल हैं। मैंने लंबा वाला लिखा है बिकॉज इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड। यू कैन यूज स्ट्रिंग अपर केस फंक्शन एज वेल। नाउ इस कोड में व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डिफाइंड अ वेरी स्मॉल मैपिंग फंक्शन जिसका नाम है अपर केस। ये नाम आप कुछ भी रख सकते थे, आई हैव गिवन अपर केस। सो आई हैव डिफाइंड अ स्मॉल मैपिंग फंक्शन अपर केस जिसमें हम नेम लेते हैं। और नेम लेने के बाद हमें करना क्या है, सिंस नेम इज अ स्ट्रिंग, सो हमारे पास एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग डॉट अपर। सो यहाँ पे जो भी नाम है, जो भी वेरिएबल नेम होगा उसको हमने डॉट अपर यानी कि अपर केस में क्रिएट कर दिया। और अब क्योंकि मुझे डेटा फ्रेम के हर नेम को अपर केस बनाना है, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई विल टेक the column name from the data frame and apply this uppercase function to the complete column. So here you can see what I am doing. मैंने बोला डेटा फ्रेम के नेम कॉलम में क्या आ जाए, डेटा फ्रेम का नेम कॉलम जिस पर हमने अप्लाई कर दिया है अपर केस नेम फंक्शन। तो इस फंक्शन को इस कॉलम की हर वैल्यू पे अप्लाई करोगे तो ये सारे नाम कैपिटल में आ जाएंगे। Okay, so here we have a next question. So the next question is we have to refer to the data frame given in the question to write a Python program. So we have to refer the same data frame, this one, and you have to write the Python program, perform the following operations in the given data set. So these are the small programs. So अब basically है क्या, सेम डेटा फ्रेम के लिए इस वाले क्वेश्चन में आपको पांडा से रिलेटेड कमांड पूछी गई थी कि पांडा से रिलेटेड आप इसमें क्यूमुलेटिव सम निकाल दो, मिनिमम आईडी निकाल दो, अपर केस कर दो। और इस वाले क्वेश्चन में सेम डेटा फ्रेम में आपको मैट प्लॉटलिब की कमांड पूछी गई है। ठीक है, सो सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट एंड दे कैन कम इन विच आपको एक ही डेटा फ्रेम दिया है और दो अलग अलग लाइब्रेरी से रिलेटेड कमांड्स पूछी गई हैं। यहाँ पे आपको एक फिगर क्रिएट करना है और उसमें दो सब प्लॉट लगाने हैं। सो द कोड इज फिगर axx equals to plt. Plt is the short form for matplotlib. So we have already imported matplotlib. Assuming this, so I have already imported matplotlib. If you feel you can write import matplotlib, otherwise it is also fine to write this code snippet. So it says plt dot subplots 2 because I had to create two subplots. Then in the first subplot you have to create a scatter plot. So what I'm giving, first subplot क्या होगा, a x is 0, x is 0 पे scatter plot बनाओ।
किस चीज का बनाना था, एज और हाइट का। तो x से 0 पे स्कैटर प्लॉट बनाओ जिसमें एज हो, हाइट हो, जिसका कलर ब्लू, ग्रीन, रेड आप कुछ भी कर सकते थे, ठीक है, और वैल्यू 0.7 अल्फा की सेट कर भी सकते हो, यू कैन लीव इट आल्सो, दैट्स नॉट दैट्स जस्ट द स्कैटर वैल्यू ऑफ योर plot. Then in the second you have to draw a horizontal bar plot with the column name and weight. So the horizontal bar plot function is bar h. In bar h function you have to give the name and the weight, and your color is as per your choice. Then you have to set the title. So you can see title is how to set the title of the figure by giving subtitle. You can give subtitle as data analysis. So this will give super title to the figure as data analysis. पूरी figure का title आ जाएगा data analysis. Next, label for x and y. Labels देने हैं तो we have the command set x label, set y label. एक्स से 0 के 1 के जिस भी सब प्लॉट के लेबल सेट करने हैं उस सब प्लॉट का यहाँ पे आप रेफरेंस दे देंगे. तो एक्सेस 0 का सेट लेबल एक्स एज एज, सेट लेबल वाई एज हाइट. एक्सेस 1 का सेट लेबल क्या था, नेम और वेट. नेक्स्ट इज लास्ट, यू हैव टू सेव द फिगर विद द फाइल नेम analysis.png. So the command to save figure is plt.savefig, which you can use to save the figure. Okay. Now from here I expect you to work with me. ठीक है, अभी तक I have given you the compiler answers. Now we will work on these questions and give the answers together. So it says you have a numpy array matrix. So this is your numpy array matrix. Now you have to give the output of the following command. ये command है, इसके क्या क्या output आएंगे. Let's understand the commands one by one. So the first command asks me matrix.t. So what is matrix.t? Any ideas? Matrix dot exactly. It wants you to calculate the transpose of matrix. So transpose क्या होता है, जो rows में है उसको column में लिख देंगे. So I have row, first row क्या है 5 10 20. So I will write it as 5 10 20. Then I can give 20 13 43. Then you can have 34 27 sorry 34 27 67. And then you can have 12 and 46 and 77. So this will be the output of your first question. Now next it asks you matrix colon 1 comma 1 colon. That means it is asking you to give the value to x. First is for the row. तो आपको पहली रो, ठीक है, पहली रो एक्सट्रैक्ट कर लेनी है और फर्दर उसमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है. सो कोलन 1 विल गिव मी द फर्स्ट बिगिनिंग से 1 तक, ठीक है ना. तो बिगिनिंग से 1 तक कैसे देगा, दैट मीन्स इट इज आस्किंग मी, यहाँ कोलन 1 का मतलब है 0 से शुरू करो और लास्ट इंडेक्स तो हम लेते नहीं है, तो 0 से 1 से पहले क्या आ गया 0. सो आई हैव टू टेक रो नंबर 0, ठीक है, रो नंबर 0 में से फर्दर व्हाट इट वांट्स मी, रो नंबर 0 में से 1 के बाद सब. तो जब भी स्टार्ट इंडेक्स में जो दिया होता है उसको हम इंक्लूड करते हैं, लास्ट इंडेक्स में जो दिया होता है उसको इंक्लूड नहीं करते. तो यहाँ पर कोलन 1 का मतलब है रो नंबर 0, बट यहाँ पे 1 कोलन का नंबर है कॉलम नंबर 1 एंड 2. सो क्या है कॉलम नंबर 1 एंड 2 ऑफ रो नंबर 0, दिस इज 10 एंड 20. सो आंसर फॉर दिस इज 10 एंड 20. Okay. Next is, although I will provide you a soft copy of answers as well, I have not given them on PPT so that you guys can actually infer with me और आप थोड़ा सा active रहें. Next is, you have matrix 130 and you have 210. So it is a associative indexing in which you are actually asking कि matrix में से रो नंबर 1 का कॉलम नंबर 2, रो नंबर 1 का कॉलम नंबर 2, ठीक है. एंड देन यू हैव टू गिव रो नंबर 1 का कॉलम नंबर 2 क्या है, एज यू कैन सी रो नंबर 1 इज दिस, कॉलम नंबर 2 इज दिस. तो पहली वैल्यू है 43. देन यू हैव टू गिव रो नंबर 3 का कॉलम नंबर 1. सो रो नंबर 3 कौन सी है, दिस इज रो नंबर 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. ओके. सो रो नंबर 3 का कॉलम नंबर 1.
Row number 3 का column number 1 is 46 and so on. So the output is 43, 46 and 5. Next is matrix -2, -4. So now जैसे ही minus आता है तो that means it is asking me to index from the bottom. So it is giving me -2. So this is my row number -1. This is my row number -2. तो ये वाली row मांग रहा है और ये क्या मांग रहा है साथ में? It is asking me -4. So what is exactly it is asking me? All the columns of the row number 2 and 3. So the output will be 3, 27, 67. Oh, sorry. I'm so sorry. Basically, it is asking me -2. This is row number -1. ये मेरे से दो रोज मांग रहा है. ठीक है, ये मेरी रो नंबर -1 है. नीचे से इफ आई स्टार्ट, ये मेरी -1 है, ये -2 है, ये -3 है और ये -4 है. तो इट इज आस्किंग मी कि रो नंबर -2 दे दो, रो नंबर -4 दे दो. सो आई एम गिविंग हिम द रो नंबर -2, दैट इज 3, 4, 20, 34, 27 and 67. And row number -4, that is 5, 10 and 20. In next it is asking me matrix true, false, false, true. यानी कि ये true, false, false, true किसके लिए है? Okay. So here in the next next question, you have question number 5. You have to give matrix and the value wherever the value is true, you will give स्क्रीन the शो नहीं हो output. रही Where आपकी. एक्सक्यूज मी मैम. just a sec. मैम स्क्रीन Just शो नहीं हो रही है आपकी. just a sec. I'll just. ओके, थैंक यू मैम. I hope my screen is visible now. Yes, ma'am. यस मैम. So for this fifth part, जहाँ जहाँ पे true है, you have to provide the value. So the value of index 0 is true. So you will provide 5, 10 and 20. Then index 1 is false, 2 is false. So we do not have to give any output. Then index 3 is true. That means I have to give 12, 46, 77. So for this particular, I will have two rows. That is for row number 0 and row number 3. Always remember that indexing starts from 0. Now again in the next question, question number 6, you have to give row number 3. Okay, and in row number 3 further, you are required to provide colon 2, means starting from beginning, starting from 0 to column 2 means 2 minus 1, that is 1. So you have to give two values, 0 and 1 of row number 3, that is 12 and 46. So the output for this is 12 and 46. Next is 7th. In 7th, you have to give matrix beginning to -1. So that means you have to give the indexing is from -1. So this last row will be displayed 12, 46, 77. In next, you have to give matrix and dimension. So the dimension of this matrix is 2 because we have rows and columns. So we just have two dimensions. One is for row, one is for column. So ndim function will return me 2. np dot swap axis, it will give me the transpose of the matrix. So swap axis is moreover transpose of the matrix. So the output will be same as given in number 1. Then in 10th question, you have to add 10 to the matrix. So that means you have to broadcast plus 10 to the complete matrix. So जितने भी values हैं सब में plus 10 होके output आ जाएगा. This will become 15, 20, 30, then 30, 23 and 53 and so on. सब में 10 add हो जाएगा क्योंकि numpy matrix में numpy arrays में हमेशा function या operation broadcast होते हैं. Okay. So now in next question, we have a data frame this and you can find you can see that we have certain again we have certain operations for which you have to write the command.
So for this question, I would like you guys to write, I would like you guys to read this question and try to solve all these three commands by yourself first, and then I will give you the correct answer so that you can tally. So you have 5 minutes to solve it by yourself, and then I will tell you the correct answer. Okay, so I hope you are able to solve it. किसी ने solve किया है? You can raise your hand maybe if you have solved it. Am I audible? Okay, so okay. Jatin has solved. Anyone else who have solved this? Fine, so let's discuss the answer. Hello, am I audible, beta? Yes, ma'am. आप audible? Yes. Okay, मतलब solve तुमने ही नहीं किया है. Am I audible and you are not even telling me कि आपने solve किया कि नहीं? That means you have not solved it. Fine, let's start. So the very first question is, list the name of the unique items sold. Okay, so it is asking you to list the name of the unique items sold. So हमारे पास names कौन से column में है? Items column में है. So I just have to find the unique value of this column because you can see यहाँ पे कुछ values repeated है, जैसे कि yogurt repeated है, chips repeated है. So I am expected to find the unique values of this column. So how I will find that? The code to find the unique values of this column is df dot items. You can write df dot items or you can write df square bracket items. Both will give you the same output. Dot unique. Okay, the function is unique bracket. So you will have to write df dot items dot unique and parenthesis. That is the function to find the list of unique items. Then to count the number of items, each value, count the number of times each value in item is stored. So you have to count the number of times each value has been stored. So that can be done using df dot items dot value count function. Okay, df dot items dot value count parenthesis. So the function to be used is df dot items dot value count.
All these functions are given in your SLMs as well. Next is delete the rows which have duplicate value. जब भी duplicate value delete करनी है, so the function is drop duplicate. ठीक है, काफी सारे function के नाम is more similar to the work they are doing. So this is df dot drop. What I have to drop? I have to drop duplicates and in the bracket किस कौन से column से delete करने हैं? Items column से. So you can write items. Okay. Also, students, I'm not giving you time to write this up because we have very less time and I have to discuss a lot of questions. ये PPT plus इसका solution. I will be giving both of them. Okay. I'll be providing this as a reading material to you guys, so you can access your class and do, revise this later on. इसलिए मैं आपको साथ के साथ note करने का time नहीं दे रही हूँ. Next is give the average price of all the low fat items. So basically low fat item कौन सी category में है? We have 3 columns and the low fat item is under the column sugar type. So we have to find the average of the price for all the items where sugar type is low fat. So let's see how we can do it. So हमें दो चीजें करनी है. पहले हमें sugar type column से निकालना है low fat वाले column और उसके बाद उन सबके price को हमें average करना है. Mean करना है, right? So let's do. So the code will be, we have to data frame dot df. We have to actually do the pricing cap. I'll write here df dot df in this you have to further give the column sugar type. Okay, I'm not writing the complete name of the column. You can write it yourself, in which you have to give low fat. तो sugar type low fat होना चाहिए. ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले डेटा फ्रेम में से शुगर टाइप कॉलम में से लो फैट वाली रोज निकाली. फिर ये जो डेटा फ्रेम आया जिसमें लो फैट वाली सारी रोज थी, उसमें सारे कॉलम थे, उसमें से हम फर्दर निकाल रहे हैं कौन सा कॉलम जिसपे मीन निकालना है, वो है प्राइस. ठीक है, तो ये मेरे पास एक प्राइस कॉलम आ जाएगा. उसके बाद मुझे इसका निकालना है मीन. सो द फंक्शन इज मीन parenthesis. So you can do that. You can write df bracket में df square brackets sugar type low fat price dot mean. Next is check if juice is one of the items. Okay, so here there is a spelling mistake. You can ignore that. So you have to check whether juice is one of the items or not. क्या ये जो भी ये डेटा फ्रेम है जिस भी कंपनी का, क्या ये जूस सेल करते हैं कि नहीं. So to check it by code, you have to write if. Okay, we have to use if. You can write if juice. Okay, I have to check whether juice is in df item. df की आइटम लिस्ट में और कौन से आइटम लिस्ट में, यूनिक लिस्ट में. ठीक है ना, हमें पूरी लिस्ट चेक करने की जरूरत नहीं, हम यूनिक आइटम्स की लिस्ट निकालेंगे. डीएफ के यूनिक आइटम्स की लिस्ट, उस लिस्ट में मेंबरशिप ऑपरेटर इन लगा के चेक कर लेंगे कि क्या जूस एक आइटम है कि नहीं है. इसका आंसर अगर फॉल्स आता है तो हम लिख देंगे जूस इज नॉट सोल्ड. अगर ट्रू आता है तो हम लिख देंगे जूस इज सोल्ड. Perfect. So let's move to the next question. Again, you have a question of data frame along with a lot of small operations to do. So question number 4, I give you as a homework from this class. Okay. You will be provided with the solutions. I will be providing these solutions tomorrow. So I expect you to work on this question today by yourself. This question is also same. इसमें आपको drop value करनी है, null value replace करनी है. So the data frame functions जैसे कि drop na, fill na, ये सब लगाने हैं. ठीक है, डोंट वरी, आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम टू प्रैक्टिस इट. अगर आपसे नहीं भी होगा so I'll be providing you all the solutions. Next is again a theoretical question. That is what are outliers and how you can detect outliers on the box plot. So basically outliers क्या होते हैं, ऐसी वैल्यू जो बाहर है. So अगर हम ऐसी वैल्यूज को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, जब हम बॉक्स प्लॉट्स बनाते हैं, जब हम ऐसे बॉक्स प्लॉट्स बनाते हैं. So इन बॉक्स प्लॉट्स में कुछ वैल्यूज होती हैं जो बाहर बॉक्स प्लॉट से बाहर लाई करती है, वो ऐसा बाहर डॉट की तरह आता है. So these dot are outliers. Outliers means those value which are not in the data. So this is a very rare question, but हाँ इस टाइप के भी questions आ सकते हैं for explanation. Now next we have
Consider the given numpy array mat. So we have a numpy array with the name mat, and the value is -1, 2, 3, 4, -5, 6, 7, 8. So now for this particular numpy array, we have to perform the following operation. सबसे पहला ऑपरेशन है create an array of 0 with the same shape. तो हमें 0 with the same shape बनाना है. We have already seen 1 का array कैसे बनता है, वैसे ही we can make 0 का array. The code will be np dot 0 likes. जैसे 1 के लिए 1 likes होता है, वैसे 0 के लिए 0 likes होता है. जिसकी तरह बनाना है, मुझे मैट की तरह बनाना है, so I can give mat. Next is print the shape of the matrix. So to print the shape of the matrix, you can write mat dot shape. So shape function will give me the shape of this matrix. ठीक है, इसकी जो भी shape है 2x2, 2x4, 3x4, whatever is the shape of the matrix you will get. Next is to print the data type of the matrix. So to print the data type, you have mat dot d type function. किसी की भी data type निकालनी है, so d type is the function that will tell you the data type. Next is print the elements which are greater than 6 in mat. All those elements which are greater than 6. So to print those elements, I have to write the command. I have to find mat में से क्या चाहिए, compare all the elements of mat which are greater than 6. So it will give me the output of all the values that are greater than 6 inside this. So the values like 7, 8 will come. Convert all the elements in the mat as float type. तो conversion करना है. So the function to convert all these functions are already given in your SLM. Okay. So the function is mat dot as type. Also, we have covered all these functions in your PCP classes as well as revision classes. So you have to write mat dot as type, and the data type to be converted is, in which you need to convert, is float. Okay. So next we have question number 5, in which you have been given a dictionary, and in which you have to produce these values. These are the keys and the following values you have to produce, and write some Python commands to solve this dictionary. So again, I give you 5 minutes to go through the question and write your answers, and then I will discuss the correct answers. हेलो हेलो हाँ जी, हिमांशु बोलो. हेलो हेलो. हाँ हाँ मैम कंटिन्यू करो आप. अच्छा, कर लिया आप लोगों ने? Okay, fine. So first of all, you have to create a data frame using the above given the Python. Okay, fine. So first question says to give you the Python command to create a dictionary with these 5 keys. Okay, so dictionary creation is already taught to you. So again, I leave it as an exercise for which I'll give the solution as well. So you just have to create a dictionary which has the following keys, and for every key you have certain range functions and all to apply. ये basic Python functions हैं जो हम first year में पढ़ चुके हैं. So you have to apply these function and generate the values for these dictionary items. जब एक बार आपने value generate कर ली, तो इस dictionary से आपको data frame create करना है. To create the data frame, you have to write pd pandas dot data frame function. ठीक है, pandas का data frame function use करोगे, और जो भी dictionary बनाई है, इसका जो भी नाम रखा है, उसको इसमें pass कर सकते हैं. Then for next you have to convert column A to index. अब इस dictionary का जो column A है, so the output of this dictionary will be something like this: A, B, C, D and E with certain values. जैसे पहले में क्या है, list of number from 1 to 1 skipping 2 at a time. So it will be 1, 3, 5, ठीक है, 7 and so on. So इस तरीके से डिक्शनरी के हर कॉलम में कुछ कुछ वैल्यूज होंगी. You have to create this column as an index column, so that you can do by using the set index function. So the command is df dot
set index, in which I will set index A and in place is true. Then you have to rename the rest of the column as area, temperature, latitude. So you can use the data frame dot column function. So suppose the name of this data frame that I created was df. So here I can write df dot columns. Columns is the function to give the column names, and here in bracket I can give the name that the column B should now become area and so on. ऐसे ही आप सारे कॉलम्स के नाम दे सकते हो. सी का नाम टेम्परेचर हो गया, डी का नाम लैटिट्यूड हो गया, ई का नाम लॉन्गिट्यूड हो गया. Then to delete the column longitude from data, to delete a column you have drop function. So you will write df dot drop, and in the bracket you can give the column name. So I have to delete the column, so I can give the column name longitude. Save the data as CSV with separator. So to save this file, again we have two CSV functions. So we can write df dot to CSV. CSV फाइल में सेव करना है, इसका फाइल का नाम देना है f.csv, एंड देन फर्दर इसने बोला है आपको क्लियरली कि सेपरेटर सेमीकोलन रखना है. सो यू कैन गिव सेपरेटर वैल्यू एज सेमीकोलन. देन okay, then again there is a question of matplotlib which I leave you for as a homework, because you have to just create a very small plot using matplotlib, and this code is already given in the book, so you can utilize it from there. Next is consider the data set. So you have this data set and you have to give the output of following commands. Okay, so we have this data set with the column year, name, roll number, marks, and age. So we have year 1, 2, 3 and 1, 2. So there are certain repeating values in the year. So year shows the year of the student, then name of the student, its roll number, marks, and age. Now the very first thing is to give output of the command student. Okay, so student is the name of this particular data set or data frame. Student के roll number क्या क्या चाहिए आपको? Student का roll number और name चाहिए, ठीक है, और further क्या चाहिए? row number 2 से लेकर 4. So when it is written 2 to 4, that means I will just get row number 2 and row number 3. There will be no 4. Last index कभी भी count नहीं होता, तो you will get 2 and 3. So for two columns, roll number and name. So I will get roll number and name, और पहले roll number आएगा because इसमें हमने लिखा है कि हमें पहले roll number चाहिए, तो पहले roll number आएगा. So I will be getting the value 25 and 26. Column number 0, 1, 2. So column number 2, ये 25 or 26 with the name Raj and Rahul. That will be the first output. Then you have स्टूडेंट फ्रेम में से क्या करना है, एज कॉलम में जहां भी एज ग्रेटर देन 20 है, तो सबसे पहले एज कॉलम में आ जाएंगे. एज कॉलम में जहां भी एज ग्रेटर देन 20 है, तो दिस इज 18, ये नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा, 22 आएगा, 25 आएगा, 28 आएगा. और हमें क्या चाहिए, हमें पूरा स्टूडेंट का पूरा डेटा फ्रेम चाहिए. सो यू विल गेट ऑल दीज 3 रोज, जहां पे भी एज ग्रेटर देन 20 है वो तीनों रोज आ जाएंगी. सो रो विद द नेम राज, राहुल एंड रोहित विल बी डिस्प्लेड. नेक्स्ट इज एवरेज मार्क्स इक्वल्स टू एनपी मीन डॉट एफ. तो हमने सबसे पहले स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स निकाल लिए, एंड देन ऑल दोज कॉलम जहाँ पे भी मार्क्स एवरेज मार्क्स से ग्रेटर हैं, वो उन कॉलम की पूरी इंफॉर्मेशन आएगी. सो द एवरेज मार्क्स कम्स हियर टू बी 74. तो जहाँ जहाँ मार्क्स 74 से ज्यादा हैं, सो आई थिंक एवरेज का फॉर्मूला तो आप लोगों को आता ही होगा. So जहाँ जहाँ 74 से ज्यादा है, that is 75, 80 and 80. So the Rita, Raj and Rohit will get displayed. All the rows with the value Rita, Raj and Rohit will get displayed because their marks is greater than 74. Then in the last it is asking me first equals to student, student year equals to 1. So जिन भी students का year 1 है, उन students के क्या सेव करने हैं, मार्क्स सेव करने हैं. तो सी अगर आपको कोई एक्सप्लिसिट कॉलम देना है तो यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, वरना पूरा डेटा फ्रेम आएगा. तो ईयर 1 के जो भी मार्क्स हैं, कौन कौन से स्टूडेंट है ईयर 1 में, हमारे पास 2 स्टूडेंट है, रानी और राहुल.
इनके मार्क्स हैं 70 और 65, तो यहाँ पर आ जाएगा 70 और 65. Now, last and very important question, binning. So binning is generally a topic which student leave. बहुत सारे बच्चे ना binning को difficult समझ के या जैसे भी छोड़ देते हैं. Never, please don't leave this topic. It is one of the very important topic of your syllabus. So here what you have, आपके पास एक सिंपल बच्चे एक लिस्ट दी हुई है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं, 10, 20, 40, 50 एंड सो ऑन. कुछ रिपीटिंग है, कुछ नॉन रिपीटिंग है. बिनिंग का काम क्या होता है, डेटा को लेके एक पर्टिकुलर बिन के अंदर डाल देना, ठीक है. एंड दैट बिन इज डिवाइडेड बाय द कट वैल्यूज, द साइज ऑफ द बिन दैट वी डिसाइड. तो हेयर व्हाट हैपेंस, आपके डेटा को ऑर्डर में अरेंज करके डिफरेंट डिमार्केशन किए जाते हैं और फिर डेटा जिस बिन से मैच होता है उस बिन में हम पुट कर देते हैं. फॉर दिस वी हैव द वैल्यू, द टू फंक्शंस, कट एंड क्यू कट फंक्शंस. So here you can see it says that you have to discretize 4 bins using cut and Q cut, in which you can give first, second, third, and fourth to the bins. What type of object is returned by pandas after binning? तो ये 5 marks का question है. 1, 2, 3, 4 and 5. You have been given 5 questions. So each output, each answer carries 1 marks. So here you can see यहाँ पर डेटा है, डेटा 10, 20, 40, 50, 60. आपने क्या किया, bin pd dot cut function कॉल किया. pd dot cut is the python pandas का cut function which in which I have said कि जो भी डेटा है, जो भी मेरी लिस्ट थी, so here you can write list. I have written it as data. During the execution you can write it as list. So इस लिस्ट को 4 बिन्स में डिवाइड कर दो और लेबल क्या है बिन के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. सिमिलरली here क्यू कट में भी आई हैव टू गिव द सेम थिंग. मैंने 4 क्यूज में डिवाइड कर दिया, 4 बिन्स दे दिए along with the label first, second, third, fourth. So this is the code output of फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन. नेक्स्ट इट इज सेइंग कि बिन के बाद कौन सी टाइप की ऑब्जेक्ट आती है. बिन के बाद आती है पांडा स्कोर सी, कैटेगोरियल ऑब्जेक्ट, ऐसी ऑब्जेक्ट जिसकी कैटेगरी हो. सो वी गेट कैटेगोरियल ऑब्जेक्ट आफ्टर क्रिएटिंग अ बिन. फिर नेक्स्ट था कोड्स एट्रीब्यूट क्या देता है. सो इफ यू राइट बिन डॉट कोड, जो भी आपके बिन का नाम है, फॉर एग्जाम्पल मेरे बिन का नाम है कट अंडरस्कोर बिन्स. सो इफ आई राइट कट अंडरस्कोर बिन डॉट कोड, सो इट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ कोड. कौन से बिन, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से बिन में गया. 10 जो था वो बिन नंबर 0 में गया, फिर ये भी बिन नंबर 0 में गया, 20 भी बिन नंबर 0 में गया. बिनिंग इज मोर ओवर लाइक आपने टेलीमार्क्स करा होगा, राइट, जिसमें हम इंटरवल्स में डिवाइड करते थे और फिर वैल्यूज को इंटरवल में काउंट करके डालते थे. बिनिंग कुछ कुछ उसी तरीके का है. सो हियर we have binned the first 3 values into 0, then 1, then 2 and 3 and so on. फिर कैटेगरीज क्या दिखाती है, बिनिंग डॉट कैटेगरीज मुझे कौन कौन सी कैटेगरी हैं जो हमने डिवाइड करी हैं, जिनका जो हमने नाम दिए हैं लेबल्स के, सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी. सो दैट इज द इंडेक्सिंग कैटेगरी ऑफ द बिन्स. ओके, so this is all for the theory paper. Now let's move to some internal assessment questions. So the next 1.5 hour we will be discussing the internal assessment question, that are MCQ based questions. In case you have any doubts in these, you can write it in the chat box. So I'll take them up in the last half an hour of the class. Okay. I hope my screen is visible to everybody. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Okay, perfect. So here I have, I will be discussing 80 questions, okay, which are from your syllabus, from different topics of your syllabus. And I require your active participation into these. So let's start. So it says, what is the primary motivation for using Python for data visualization? हम data visualization के लिए बहुत सारे tools use कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास Excel है और other tools भी हैं जिनको आप use कर सकते हो. तो why Python? So the answer is basically, ये तो बहुत simple question है, बहुत ही general question है, but इस तरीके के questions भी आ सकते हैं. So basically we use it for simplicity and ease of use. Okay.
Just hold for a second. टापू रे टापू अरे सांस तो लेने दे मैम को भाई तो है पता उनका। Hello, hello. Dot. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, okay. Asha ma'am has got some work, so I'm continuing with your MCQs. Okay, so you all were doing the first sample MCQ. What is the motivation for using Python for data analysis? So the first one is its simplicity and ease of use, compatibility, its support for complex statistics analysis. Okay. So it's basically its simplicity and its use. Now the second question for you is, which Python library is commonly used for numerical computing and handling multi-dimensional arrays? Then do we need to answer? You please, yes, you need to tell the answer and then I will say whether it is correct or not. I'm NumPy. Okay. So you all can write your answer in the chat, right? Okay. So one is saying NumPy. Another one, anyone else? So this C NumPy. Okay, NumPy. Yes, it's a NumPy, right? Fine.
मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। So the next question for you is, what is the primary source of NumPy in Python data analysis? What will be the primary source? Sorry, the third question is here. What is the primary purpose? What is the primary purpose of NumPy in Python data analysis? So the correct answer is data manipulation and analysis. See, we are not doing any data visualization. We are not doing any statistical modeling. We are not doing any web scraping. Data visualization is in the और data visualization आपका होता है मैटप्लॉटलिब से, ठीक है? Statistical modeling, we are not doing any statistical modeling. Web scraping is like collecting data from different web resources, and we are not doing any web scraping. We are not collecting any data using NumPy. So the best option is data manipulation and analysis. We have different functions. हमारे पास data manipulation और data analysis के बहुत सारे functions हैं NumPy में, जैसे mean, median, mode है, और हमारे पास हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है या हमको कोरिलेशन निकालना है. So we have different functions in it. Now, the fourth question for you is, which of the following is not a data structure provided by pandas? मैम एरे। Anyone else? हेलो मैम। हेलो मैम, वॉइस वॉइस आ रही है मेरी? मैम इस ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन 4 इस ऑप्शन सी एरे। हेलो हेलो मैम, एरे होगा इसका आंसर, एरे। एरे आंसर होगा। हेलो मैम। शायद एरे ही होगा। मैम की वॉइस नहीं आ रही ना। भाई हाथ तो लेन दो मैम को। मैम ने शायद म्यूट किया है भाई। So one of the students answered as arrays. Okay. आप लोग ने अपने आप को म्यूट करिए because it creates lots of noise at here. So the correct answer is array. Why array? Array is an index. Array is a data structure provided by NumPy, whereas pandas provide series and data frame as the data structure. Now the fifth question for you is, what does matplotlib provide in Python for data visualization? मैम प्लॉटिंग फंक्शंस। Yes, so if I talk about the matplotlib provide the plotting functions for in the plotting functions. We can visualize data, we can plot graph with the data, right? So plotting functions is the right option.
Now, another question is which function is used to import data from a CSV file into a pandas frame? Now see, you can see that all the four options are very similar. One is pd.load.csv, another is pd.read file, another one is third option is pd.read.csv, and the fourth option is pd.import.csv. So which one is the most appropriate answer? Ma'am, option number C. Option number C, okay. So it is your read CSV. When you have to import the data uh, from a CSV file into a pandas data frame, you will be using read CSV. Now, which of the following is not a valid way to export data from a pandas data frame? So let me give some chance to the other students. Let me call one by one name. Miss Bhumi can answer. Miss Latika Gupta, can you please answer which one is the right option? You can write in chat also if you are not comfortable. Okay, if you are not comfortable in unmuting yourself. Okay, so which of the following is not a valid? The correct option is export CSV. This function does not exist in pandas data frame. You can use the function df.csv. You can use the option pd.csv. You can use the option df.excel, but there is no function like export underscore CSV. The functions are to CSV, right? Which function is used to import data from an Excel file into a pandas frame? Ma'am, first one. So it is basically your first one, read Excel, right? If I talk about CSV file, it is read underscore CSV. If I talk about Excel file, we have read underscore Excel. So these two are different functions. Which Python library is used for creating line plots, bar plots, histograms, and other types? And matplotlib. Yes, it is the third option, matplotlib. What is the purpose of head method in the pandas? Ma'am, to view the first few rows of data A frame. option. To Ma'am, view first the option. Ma'am, First first row. first option. few Few rows, to rows. view the first few rows of the data frame. Okay, so I am taking Asha madam is joining again. I am taking a leave from here. Yes. So the next question is, which library provides support for high-level mathematical functions in Python? So what is the answer? Ma'am, NumPy. Yes, NumPy. How can you import the NumPy libraries in Python? So the statement is very straightforward. Import NumPy NumPy of NP. as NP, right? So, but also you can see Import NumPy. Import NumPy first question yeah. is the right. Perfect, perfect. What is the function used to export data from pandas data frame to Excel file? So pandas से अगर Excel में data ले जाना है तो what is the command? अगर Ma'am, CSV में ले जाना होता है तो we have two CSV. df.to excel. df.to excel. Okay. So you can always, I mean, answer करते हुए you can tell me option B or option C. Okay, that will be more easier.
df.2excel. Perfect. What is the primary benefit of using pandas for data analysis? So why is pandas useful? मैम एफिशिएंट है हैंडलिंग ऑफ बिग डेटा. हाँ, efficient Option है. सी दैट इज वेरी राइट. ये सारे ही जो आपके जितने भी आपके ऑप्शन है ये सारे ही करेक्ट हैं. सो व्हाट इट इज आस्किंग इज द प्राइमरी बेनिफिट. सबसे पहला बेनिफिट, एफिशिएंसी से भी पहला बेनिफिट किसी भी चीज का होता है इजीनेस. ओके, सो इट हैज इजी टू यूज डेटा स्ट्रक्चर्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन. ऑल्दो दिस इज एन एम्बिगुअस क्वेश्चन, सो मतलब efficiency is as good as easiness, but yes, whenever we consider this in the ascending order, ease of use is the first thing that we search out. Next is, which Python library is commonly used for data wrangling and analysis? Pandas. Panda. Which of the following library is used for array manipulation in Python? Python में array manipulation सबसे अच्छा किस में होता है? NumPy. Perfect. B option. तो बस तुम्हें तो पेपर आता है फिर. What is the correct way to import NumPy in Python? So we, oh, okay, this is a repeated question. Import Sorry. NumPy. Yeah. Okay, sorry. But so इसमें you can see the options are different. So this the first option is true. Which function is used to create numpy array from a regular Python list? Python list से numpy array create करना हो. np.array. np.array. A option. Yes, A. Perfect. What is the output of the following code? So you have this code, import numpy as np, array equals to np.arrange 1 to 10 and print array. So इस code का output क्या होगा? मैम b. B, sorry. from 0 to 9. We will get 10 numbers from 0 to 9. What b. data type is used for numpy arrays by default? Default data type क्या होता है numpy arrays का? मैम int. It is int 64. numpy dot int 64. Yes. मैम हमें 20. 64 को पूरा लिखना पड़ेगा. नहीं बेटा, ये ना 64 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में ही ऐसे आते हैं. ठीक है, 64 इज द मेमोरी स्पेस दैट इज रिक्वायर्ड. आपको लिखने में कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक है, ये मोर ओवर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है. सो चेक योर अंडरस्टैंडिंग. जैसे कि int is also available and numpy int 64 is also available, but if I'm talking about numpy, so the best suitable answer is numpy dot int 64. ओके मैम. क्वेश्चन का आंसर शो कीजिए एक बार आप. क्वेश्चन नंबर 19. Just okay. So next question 21. Which method is used to perform element-wise addition of two numpy arrays? np.add. D option. Sorry. D. Yes. I'm so sorry. Take that. Yes, करते हैं. So this is np.add. What is the output of the following code? 0 का first element. मैं इसका 0 रो कौन सी है? Number ये पहली number वाली रो 0 है और इसका पहला मैं एलिमेंट इसका क्या है? 2. two. ठीक है ना? So 2 is the answer. Which function is used to transpose a numpy array? np.transpose. Very good. Okay. What is the output of the following code? I think A B option. B है. देखो क्या करना है आपको बेटा, सुनो. आपको एक एरे दिया, उसको ट्रांसपोज करना है ना? ट्रांसपोज में क्या होता है? रो का कॉलम बन जाता है. तो अभी रो क्या है? 1 2 3. ठीक है. और आई मीन दैट इफ यू कैन सी, जस्ट अ सेक, लेट मी कनेक्ट द पेन. ओके, सो इसमें जो आपका एरे है, जो करंट एरे बनेगा, वो है आपका
वो है आपका 1 2 3 और दूसरी रो होगी 4 5 6। तो अब क्या होगा, रो का कॉलम और कॉलम का रो। तो पहला कॉलम क्या है 1 4, तो अब पहली रो क्या बनेगी 1 4, दूसरी रो क्या बनेगी 2 5, तीसरी रो क्या बन जाएगी 3 6। तो कौन सा आंसर आएगा, कौन सा आंसर है बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट 25, which method is used to perform element wise multiplication of two numpy arrays? NP dot multiply. Multiply. D option. या हाँ जी, क्या कह रहे हैं बच्चे? D What option. is the D option. ऑप्शन डी। D? हाँ, so it is np dot multiply. What is the output of the following code? क्या करना है, दो एरे हैं, एरे 1 एरे 2, आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई होंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, दैट इज 5 into 5 into 1 2 into 6, that is 5 12, this is Ma'am, A 8. option. How can you create a numpy array with all the element initialized to 0? कैसे बनाएंगे, सारे एलिमेंट की वैल्यू NP 0 dot होनी 0. चाहिए, np dot 0, NP dot 0. एरे वाला नहीं आएगा, 0 आएगा। सो द बेसिक एम ऑफ दिस प्रैक्टिस इज कि आपको पता चले कि कैसे छोटे छोटे सी है एम्बिग्विटीज को आपको दूर करना है। फॉर एग्जांपल ए एंड बी में से अगर आपने तैयारी नहीं करी होगी, कभी नहीं पढ़ा होगा, तो आप सीधा बी लगाओगे, बिकॉज एरे वर्ड भी आ रहा है, 0 वर्ड भी आ रहा है। बट इफ यू हैव रेड इट, यू विल गेट टू नो फटाफट से कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। सो थोड़ी सी प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रीशेप फंक्शन इन numpy array? रीशेप क्या करता है? To change the shape of an array. यस, जो भी एरे की शेप होती है उसको चेंज करता है ना, उसमें कुछ ऐड करता है ना डिलीट करता है, सिर्फ एरे की शेप को चेंज कर देता है, जो भी आप शेप बताओगे उसमें। Which function is used to find minimum value in the numpy array? NP. NP. Dot min. min, हाँ, मिनिमम नहीं होता, min होता है। ओके, और ये सब प्रैक्टिस से आएगा। What is the output of the following code? 100. You have an array with a range value of 10, मतलब तुमने 0 से लेकर 9 तक एक एरे बना लिया। उसके बाद तुमने एक स्लाइस एरे बनाया जिसमें 2 से लेकर 5 तक की वैल्यू आई है, तो दैट इज 2 3 4 आ गया। फिर स्लाइस एरे के 0 पे तुमने डलवाया 100। तो क्योंकि नंपाई एरे में क्या होता है, इट इज अ व्यू ऑन द कॉपी, दैट मीन्स अगर स्लाइस एरे में कुछ भी चेंज करोगे तो मेन एरे में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे तुमने स्लाइस एरे के 0 पे 100 डलवाया, सो लेट्स सी, इसको थोड़ा सा हल्का सा समझ के देखते हैं। वैसे तुम पहले आंसर बताओ, क्या पता तुम्हें पहले से ही आता हो। A option. ए ऑप्शन, यस, हाँ मैम ठीक बता दो कैसे है है ना, हाँ मैं बता दूँ। सो बेसिकली हमने सबसे पहले इस वाली लाइन में क्या किया, एक एरे बनाया। तो ये तो सबको समझ आ गया कि एरे की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 है ना, अप टिल 9। तो ये एक एरे बना। अब फर्दर हमने बोला कि इस एरे को 2 से लेकर 5 तक स्लाइस कर दो। तो स्लाइस एरे क्या बना मेरा, स्लाइस एरे के अंदर वैल्यू है 0 1 2, यानी कि 2 3 और 4। ये बना मेरा छोटा एरे जिसका इंडेक्स रहा होगा 0 1 एंड 2। ठीक है, नाउ स्लाइस्ड एरे के 0th इंडेक्स को आपने क्या करा, 100 सेट कर दिया। इस वाली वैल्यू को 2 की जगह क्या चेंज कर दिया हमने, 100। ठीक है, अब ये जो वैल्यू थी स्लाइस इंडेक्स का, जो 0 वाला था, वो ओरिजिनल एरे का कौन सा इंडेक्स था, 2 था ना। तो 2 की वैल्यू अब क्या हो गई हमारे इस, क्योंकि एरे व्यू होता है तो 2 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 100। तो ये पूरा एरे क्या प्रिंट हुआ, 0 1 100 3 4 5 6 7 8 सब सही रहेगा। तो हमें क्योंकि प्रिंट एरे करना था, ओरिजिनल एरे, तो सारी वैल्यू आएगी विद द वैल्यू 2 सेट टू 100। ठीक है, now which of the following function is used to flatten a numpy array?
Flatten. एक numpy array को हाँ flatten. फ्लैटन, हाँ ठीक है. रेवल, although ये फंक्शन तुम्हारे कोर्स में नहीं है तो we can skip this question. What is the output of the following code? इस कोड का आउटपुट बताओ. Ma'am, 1 2 3 4 4 5 6 3 5 7 1 2 3. हाँ जी. आपने क्या किया, array dot sum x is 0. ठीक है. So this x is basically you are trying to sum this array with its own axis. इन दोनों को ही आपस में सम करने की कोशिश कर रहे हो. तो what will be the output? 4 plus 1 5, 5 plus 2 7, 6 plus 3 9. So the answer is 5 7 9. Next, which of the following functions, हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे. We just have 1 hour और अभी हमारे बहुत सारे questions बाकी हैं. Which of the following function is used to concatenate two numpy arrays along a specific axis? दो numpy arrays को concatenate करना है, इकट्ठा करना है. कौन सा function use होगा? C? Contact. 3 option. Okay. D option. NP dot concatenate. What is the output of the following code? ये कोड है, ये आपका एक एरे है, एरे 1 एरे 2 और इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करना है. तो ये एलिमेंट बाय एलिमेंट कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे. क्या आउटपुट देगा ये? देखो 1 2 5 6 एक साथ आ जाएगा, 3 4 7 8 एक साथ आ जाएगा. तो बी इज द आउट. नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? 1 to 11. Ma'am, 1 to C. 10. From 1 to 10. मैम ऑप्शन ए. कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी मैम. ऑप्शन A. ए. ए. A. हाँ. ठीक है. कैसे आया बताएगा कोई? 2 का गैप. मैम पहले तो 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स बन गए हमारे पास में और पहला डिजिट हमारा 1 है. तो 1 के बाद में 3 5 7 9. हाँ हाँ स्किप. हाँ वी आर स्किपिंग Gap, एक्चुअली, वी आर 2 का प्रिंटिंग gap. एरे बाय. हाँ 2 के गैप के साथ. थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन 36. In pandas, which data structure is used to represent one-dimensional array with labels? Pandas Series. में पूछ रहा है अब, है ना? हाँ सीरीज. गुड. Series. numpy arrays थोड़े थोड़े pandas सीरीज जैसे होते हैं. Or you can say series are a little bit like panda numpy arrays. What is the correct way to import pandas in Python? Import pandas. A option. ठीक है. Import pandas. ठीक है. Import pandas as PD भी चल जाता, but since from all of this is the best option. Which method is used to load a CSV file into pandas data frame? I think we have already done it. Read CSV. Okay. So we have to read मैम the ये तो CSV रिपीटेड file. है मैम. ये नीचे का भी रिपीटेड है. ये क्वेश्चन डुप्लीकेट है. 39 question. रिपीटेड आता है. repeated है. रिपीटेड क्वेश्चन है अच्छा. मैम, रिपीटेड है. अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, इतने सारे क्वेश्चन थे, हो सकता है रिपीट हो गए हो, कोई बात नहीं. व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेड? वी हैव ऑलरेडी डन दैट. ठीक है. इट रिटर्न्स फर्स्ट फ्यू रोज ऑफ द डेटा फ्रेम. ओके. ये तो नया है. व्हाट इज द करेक्ट वे टू एक्सेस अ कॉलम नेम्ड एज इन pandas डेटा फ्रेम? कैसे एक्सेस करोगे कॉलम को? मैम फर्स्ट Yeah. वन. फर्स्ट वन. हम yes. Straightforward. What is the function used to calculate the mean of a column in pandas data frame? मीन. मैम मीन होगा. ए. फर्स्ट वाला. फर्स्ट. Good. Good. ए मीन. What is the output of the following code? ये कोड है. Uh, 2 3. I think 2 3. हम पहले फिर रन करेंगे. बताओ क्या होगा आंसर. देखो जो इसमें तुमने नेम और एज दिया ना वो इसके कॉलम है. अब बताओ क्या होगा आंसर. 2 3. 3 2, क्योंकि ये नेम और एज पे बचे इसके वो हैं. पहले नेम रो और एज होती है इसके फिर कॉलम कॉलम है. आता हाँ है. पहले रो होती है फिर तो 3 रो हैं इसमें. तो बेसिकली ये डेटा फ्रेम ऐसा है कि यहाँ पर है आपका नेम, एज और इसके अंदर 3 3 रोज है ना. तो ये 3 और 2 कॉलम, तो 3 2 है इसकी डायमेंशंस. ओके. सो द आंसर इज 3 2. सामने बैठ के अपना पढ़ लेना जाके.
Which method is used to group data into pandas data frame? D Group D मैम D B. हाँ राइट सुन लिया. नो मैम D Very good. D C के बाद D होगा. सॉरी राइट परफेक्ट. चलो इस पे आ जाओ. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? पहले ये कोड देख लो फिर आउटपुट दिखाऊंगी बिकॉज दिस इज अ लिटिल लॉन्गर क्वेश्चन. सो तुम पहले कोड देख लो फिर इसका आउटपुट डिसाइड करते हैं. मेरे को फोन चलाने को नहीं मिला, मेरा चेक करने को नहीं मिला. बेटा माइक ऑन करके कुछ भी नहीं बोलो. क्लास रिकॉर्ड हो रही है. सो इफ यू वांट टू टॉक एट योर होम प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके. सो यू हैव टू ग्रुप बाय एज. ठीक है. सिंस इसमें मल्टीपल डेटा है ही नहीं, ये बहुत इजी आंसर है. क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपको हर एज के हिसाब से ग्रुप बाय करना है. ठीक है. और हर एज का एक एक ही एलिमेंट है. तो आंसर इज वेरी इजी कि एज 25 का एक, 30 का एक, 35 का एक. सो आंसर इज ए. ओके. बाकी सब में देखो वैल्यू मैच नहीं हो रही. सो ओनली दिस इज द आउटपुट. Which method is used to perform element-wise addition of two pandas series? Panda dot add. Repeated. PD dot add. Add. What is the purpose of fill NA method in pandas? Fill NA method क्या करता है? मैम नल वैल्यूज को फिल करता है ना. फिल करता है हाँ, to specified fill value. null values. Option B. Perfect. बड़े अच्छे नंबर आने चाहिए फिर सबके आईए में. बहुत अच्छा कर रहे हो. वेरी गुड. What is the output of the following code? 1 2 3 1 2 3 1 2 4 6. मैम इसके नीचे भी कोई है क्या? मैम थोड़ा ये सीधे option करिए ना, वो दिखाई. ऑप्शंस दिखाऊं रुको. हाँ मैम ये ऑप्शन. ये है, ये ऑप्शन है. ऑप्शन ए. ए. ठीक है. मैम थोड़ा जूम आउट कर दूं. इज इट ओके नाउ? No, option A 1 2 3 4. So basically nothing. You just had to fill 0 at the values where there is NA और none. तो एक ही जगह none था, उसकी जगह 0 आ जाएगा. और फिर जब DF प्रिंट करोगे तो 1 2 3 4 0 6 आ जाएगा. That's it. How can you 48. drop rows with null values from a panda data frame? यहाँ सही होगा. How can you drop rows with null values from a pandas data frame? मैम ड्रॉप एनए. बातें नहीं बच्चों, बातें नहीं. मैम ड्रॉप एनए. हाँ, drop NA. Okay. Next is, what is the output of the following code? 4 1 2 3 4. Option 5. Row number 0, column number 1. iLog क्या करता है? रो बेसिस पे फिल्टर आउट करता है ना. डेटा फ्रेम में अगर सीधा वैल्यू दोगे तो कॉलम फिल्टर आउट हो जाएगा. 2 4. सिर्फ 0th रो का फर्स्ट कॉलम लेकर आना है. iLog क्या बोल रहा है? iLog करो 0th रो में फर्स्ट कॉलम. 0th रो कौन सी है? ये वाली. इसका फर्स्ट कॉलम कौन है? 4. देखो ना एक मिनट. ठीक है. ये ऐसे लगेगा ना. A B 1 2 3 4 5 6. गलती से. हाँ गलत ले लिया होगा. सो दिस हैज यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ड्यूरिंग एग्जाम आल्सो. क्योंकि कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में भी गलती कर जाते हैं. हमें लगता है ये तो हमें आता है, ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है. ठीक है. एंड ऑल्सो एज यू ऑल नो कि हमारे पास जो हमारा इंटरनल असेसमेंट अगर आप पिछली बार दे चुके हो तो उसमें रिव्यू वगैरह के भी ऑप्शन है. तो आप अपना एग्जाम देने के बाद एक बार टाइमली रिव्यू भी करें. हैपजार्डली कुछ भी अटेम्प्ट मत करना. Which method is used to rename the columns in panda data frame? सेकंड B वन. option. Rename. Second one, rename. What is the output of the following code? 1 2 3 4 5 6. मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर A लेती हूँ option. ताकि आपको सारे ऑप्शन दिखें. मैम A. ऑप्शन बी. अच्छा. ओके फाइन. क्या बात है, बहुत बढ़िया. हाँ ऑप्शन बी. नहीं, ऑप्शन ए. A है. A है. कॉलम का नेम What is चेंज the कर दिया. purpose of merge function? Based on edge of टू मर्ज और 2 or more डेटा. B.
Which of the following is used to perform SQL like join operation in Panda? Panda में join operation करने हो तो कौन सा function use करते हैं? PD dot join. PD dot merge. Merge. PD dot join कोई function ही नहीं मर्ज, है. हाँ मर्ज होगा Merge. मर्ज। Good, good, very good. What is the output of the following code? So you have मैम two थोड़ा data ऊपर कीजिए fields. आपको इन्हें merge करना है. अच्छा इसको zoom out करूँ. ऑप्शन। ठीक है? Is it okay? B option. B. मैम बी B या A? B. इज ए Merge D, करना D. है. आराम से करो कोई बात नहीं. मैम बी मैम मर्ज करना है बट मैम वैल्यूज मैच नहीं कर रही ना, दोनों की वैल्यूज अलग अलग हैं। 1 2 3 7 8 9 6 कॉलम 6 रोज बन जाएंगी हमारी। इज ए It's A. ठीक है? B. It's A. ठीक है? Okay, what we can do is we can run it. Okay, हम इसे run कर लेंगे. अभी पहले आगे कर लेते हैं, then we will come back and run it. What is the function used to perform aggregation in pandas? AGV. A double C. P. C. ए जी जी। What is the C. library commonly used for plotting and visualization? ये तो हम A. सबको पता है. Matplotlib. Yes, yes, yes. What is the Matplotlib. correct way to import matplotlib pyplot Option A. module? Ma'am, first Option A. one. Option A. हाँ, ऑप्शन ए perfect, perfect. Which function is used to create a line plot in matplotlib? Plot. Ma'am, Line plot के लिए simple plot. Plot. Simply. plot. Perfect. What is the purpose of X label in matplotlib? Ma'am, x-axis के लिए होता है. Flat off. Second B. Second. B. Which method is used to create a scatter plot? Plot. One plot scatter. Plot ma'am, underscore D. scatter या सिर्फ scatter? PD dot D. scatter है ना? Only scatter. तो सिर्फ scatter हुआ ना? प्लॉट scatter थोड़ी यूज करते हैं. PD dot scatter. What is the output of the following code? 1 4 plus 1 4 3. Ma'am, Scatter. line plot with red Dashed line. dash line. A line plot with हाँ, red dash B dash option. line. B. होगा B. कलर का दे Ready. रखा है. What function is used to add legend to a matplotlib? Ma'am, Yes. legend. नहीं sorry, Figure label. legend के लिए. Show legend. Legend. हाँ, D होगा show ना? legend तो दिखाने के लिए होता है. Legend ऐड करने के लिए legend. PD dot legend. Sorry. Only as PLT dot legend. What is the correct way to create a bar plot? def plot. MC. अब यहाँ PLT ऊपर dot पढ़ लो. ये बार Def प्लॉट B. बनाना किस में है? पांडाज में. पांडा नहीं बनाना है। Def plot bar. मैम वो plot dot bar लिखा है ना उसको तो df dot plot dot bar. हाँ हाँ हाँ, बी वाला. What is the purpose मैम of title? हाँ बताओ. मैम plot dot थोड़ी होगा मैम, plot dot bar होगा. प्लॉट डॉट ही होगा बेटा. पांडाज से तो डीएफ डॉट प्लॉट डॉट बार से ही करते हैं ना पांडाज में तो. Okay. What is the purpose of title function in matplotlib? to set title of plot. The settle हाँ order. जी, हाँ जी, बिल्कुल. नेक्स्ट देखो 65. तो मैम plot sorry Hist. होगा. Hist. A option. PLT dot hit. What is the primary purpose of group by? Grouping. Grouping the data. ग्रुपिंग का डाटा, हाँ डी। What function is used to perform aggregation? अच्छा इसमें पूछा है what is the primary purpose. अगर क्वेश्चन में लिखा होता what is the purpose of group by operation और यहाँ पे एक ऑप्शन होता above all, तो हम above all लगाते क्योंकि ग्रुप बाय से हम ये सब कर सकते हैं. ठीक है ना? क्योंकि प्राइमरी पर्पस पूछ लिया इसलिए इसका आंसर ग्रुपिंग है. 67. अगेन एग्रीगेशन के लिए वी हैव Aggregate. Aggregate. ए होगा हाँ। वैसे ए हाँ विद एजीजी फंक्शन होता है. ठीक है ना? इसमें एग्रीगेट लिखा हुआ है बट द फंक्शन इज एजीजी. व्हाट डज द एजीजी फंक्शन डू? इट क्रिएट्स एग्रीगेट. Aggregate data based on. In a group by operation in pandas, what does the split step do? No comment. Set off into single object. 69 मैम क्या C करता है? option. B. हाँ
क्राइटेरिया के हिसाब से ग्रुप्स में डिवाइड करता है. Which of the following function can be used with AGG functions in Panda? Panda में इनमें से कौन सा फंक्शन एग्रीगेट के साथ यूज कर सकते हो? All of the above. All of same. All of All the of above. above. Very good, बहुत All बढ़िया. of the above. What is the purpose of transform function in Pandas? Sorry, हाँ, transform. सही. मैम फिल्टर डेटा फिल्टर करता है. C option. It performs element-wise operation. Operations on data. मैम C. It performs element-wise operation in data. हाँ. What is the output of the following operation? Group by category value. B वाला लग रहा है. It spells out. It applies to mean values. It applies mean of the value column to each row, है ना? Based on its category. What is the purpose of pivot table in Pandas? To reshape data. Filter. Filter. To reshape data. Which of the following functions is used to create pivot table? ये तो बहुत इजी है. बताओ कौन सा है? A B C D. C. A. मैम D या C? C. C. अब बोल दो. In pivot table, which arguments specify the values to be aggregated? Values. Aggregated index. It's called values. Values C. Values होगा. मैम ये स्क्रीन result of following up? हो जा रहा है. मैम वो थोड़ा सा ना नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है बच्चे. Okay, इसलिए ma'am. हो जा रहा है. Don't worry, everything is recorded and it will be shared on YouTube as well. ठीक है? और anyhow we are still approachable. Don't worry. थोड़ा फ्लिकरिंग हो रहा है मेरी तरफ से, I know. But अब वैसे लास्ट के 4 क्वेश्चंस ही बचे हैं. Then we are through. What is the result of following Okay, operation in Pandas? So you have made a pivot table. Okay. So it is creating a pivot table with the mean values value for each category. C. and month. C होगा. What is the purpose of cross For the purpose of the tabulation? constituent pandas to receive data filter that has tabulate frequency value of variable. cross tabulation pandas. Function of the perform calculation on pandas. Which function is used to perform cross tabulation? कौन सा function होता है? D. tab. First table. Cross tab. Yes, ma'am. A होगा. चलो last 2 ED questions. cross tab the seventy of month. Copyright month. And कौन सा आएगा 79 का? first वाला. ये तो Free option. what does the margin argument do in the cross tabulation? Pivot table or cross tabulation in Pandas? It's B. Row and column add Adds, करते हैं. It's add a row column showing the totals. Yes, ma'am. Ma'am B होगा. हाँ, very good. Perfect, done. Just give me a second. Let's stop recording now. Okay.